Hello everyone, welcome to Swiflearn live classes where we talk to each other and have an interactive class. I can already see so many children there connecting to me, and I'm happy to see you all today. All right, so before that, what the platform is, the platform named Swiflearn says that we try harder. By saying that we try harder, each and every teacher here tries much better next time. Like whenever she comes next time, she's trying to be better. She's trying harder each and every day for finding different and beautiful way of explaining a topic to you. So here I am in the platform Swiflearn, and I'll tell you something about the platform. So this platform provides students 100% live and interactive class, by meaning that there is a live session. Right now I'm there live in the YouTube with all of you, yes? But what happens to the students who come and see this video when I have gone? Yes, for those students, when they have a problem, we having a platform, you can come there, join us with them on the platform, and then we can have 100% live classes. And it is an interactive one. Interactive how? See, you and I will be talking about the topic. We'll understand the topic in depth. We'll understand how are the different ways of solving a problem, right? For that, I will need number of students. अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि इंटरैक्टिव है और सारे बोल रहे हो. समझ आएगा? नहीं आएगा ना? Right. That is why for making it an interactive class and an understandable class, we have made that we should have a batch of maximum of 6 students. That's it. So 6 students will be sitting in front of a teacher for a particular 1 hour, and that teacher will be taking care of each and every student. तो 6 स्टूडेंट्स है, इजिली मैनेजेबल हो जाता है, हर किसी की वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी दिख जाते हैं टीचर को, राइट? तो ऐसा नहीं है कि इतने सारे बच्चे हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है ना? सो इट्स नॉट लाइक दैट. Third thing is that there is a dedicated mentor team that tracks the work of students' progress. तो ये टीम क्या करती है? सी, जब हम फर्स्ट डे आते हैं ना इस क्लास में, तो हम जैसे क्लास में परफॉर्म करते हैं, हमने आंसर्स दिए या नहीं दिए, दोनों चीज है, राइट? ये नहीं कि सिर्फ आंसर दे रहे हो तभी ट्रैक होगा, दे रहे हो या नहीं दे रहे हो तो सही दे रहे हो या नहीं दे रहे, तो वो चीजें भी हम ट्रैक कर लेती है ये वाली मेंटोर टीम. ये सिर्फ क्लास वर्क नहीं, हमारा होम टास्क जो हम देते हैं वो भी ट्रैक करती है. और उस होम टाइम में जो टाइमिंग्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा गेम क्या होती है? समझ तो टॉपिक आ जाता है बट टाइमिंग और क्लिकिंग की प्रॉब्लम है, राइट? मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है बट जब मैं करने बैठूं मुझे वो क्लिक ही ना करे, मुझे वो आए ही ना आइडिया, तो प्रॉब्लम वहीं आ जाती है सारी, है ना? तो ये टीम ना हमको क्लिकिंग वाला पॉइंट बता देती है कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व तो करा है बट इसने कंपैरेटिवली इतना ज्यादा टाइम लिया. तो हमें पता चल जाता है एज अ टीचर टाइमिंग से कि अच्छा इस बच्चे ने इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम लिया है, तो क्यों ना उसी क्वेश्चन के उसी टाइप के प्रैक्टिस करवा दें. और जब वो चीज सॉल्व हो जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आई थिंक पूरा सिलेबस सॉल्व हो जाएगा, है ना? यस, वी ऑल्सो कवर सिलेबस एज पर स्कूल एग्जाम शेड्यूल. तो एग्जाम से पहले ही बता दो कि मैम पेपर है, तो तैयारी कर लेंगे. क्यों करेंगे? प्रूफ तो करना पड़ेगा, राइट? अगर हम कह रहे हैं कि हम वर्क करते हैं हार्ड, तो आपका रिजल्ट तो लाना पड़ेगा. फॉर दैट वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू टीच यू बिफोर हैंड. Not only that, we also handle custom request. Custom request का मतलब क्या है? ये वाला टॉपिक मैं 9th ग्रेड में हूँ बट मुझे ट्रिग्नोमेट्री 10th की भी पढ़नी है पहले ही. मैं तो बोर्ड के लिए पहले ही तैयारी करना चाहती हूँ. I am smarter. I want to prepare. So why not? We are here to teach you. You tell us in advance that I am in 9th grade, but I want some topics from the 10th which are very important. जो 6 marks के questions है, वो बोले topics उठाओ और मुझे अभी से ही पढ़ाना शुरू कर दो. So we are here to teach you those topics also. So will you not say that Swiflearn is known as the India's most sincere learning destination? सिंसेरिटी तो है, लाइक एजुकेशन तो है, पढ़ा तो रहे हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो सिंसेरिटी तो दिख रही है, राइट? Yes, so we teach from grades 1 to 10. So anyone who's watching this video, why not come and book a trial? And the trial class is free. We are not charging anything. So you can come to our platform, book a trial so that you can say, we are already saying that we are providing all of this so that you can check जो ये मैम बोल रही हैं वो सही है या नहीं. You all want that? All right, so here we go with some more key features. I'll put a light quickly.
detailed progress reports, or there will be a stats that will show up and down how are you performing. So that whenever it's a down, it's a ting ting ting, red alert, the child has not performed good, the teacher starts working harder and harder, the platform, the team, everyone is starting concentrating on the child. Why was it a drop? क्या प्रॉब्लम थी? क्या वो बच्चे को समझ नहीं आया, बच्चे ने केयरलेस मिस्टेक करी या सिली मिस्टेक्स, वट एवर, लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी, राइट? सो वो चारी इतनी बारीकियां भी ध्यान रखते हैं और हमें प्रूफ मिल जाता है कि नहीं बच्चे को टॉपिक तो आता है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक ही नहीं आता, बट हाँ थोड़ी सी मिस्टेक्स कर ली थी कैलकुलेशन में, तो हम उसका कैलकुलेशन वर्क करना शुरू कर देते हैं, right? Secondly, it is a Swiflearn academic test series. Swiflearn academic test series क्या है? It's an exam online. मैं एक कंपटीशन में स्कूल में कितने बच्चों से करती हूँ compete? 150 स्टूडेंट्स, राइट? क्योंकि 30 स्टूडेंट्स हर एक क्लास में, 5 सेक्शन ऑन एवरेज, 150 स्टूडेंट्स, राइट? बट रियल वर्ल्ड में क्या मैं उन 150 के साथ compete करती हूँ? नहीं ना? क्या पूरे वर्ल्ड में उस क्लास में सिर्फ 150 बच्चे हैं? 9th ग्रेड में सारे 150 हैं सिर्फ? नहीं ना, देयर सो मेनी, राइट? तो उन सबसे ही compete करना है. एंड ऑफ द डे जब मैं ग्रेजुएट होंगी तो मेरे साथ के वो सारे बच्चे ग्रेजुएट होंगे. सबको जॉब चाहिए, सबको अपनी ड्रीम्स फुलफिल करनी है. तो अगर उनसे मुझे अहेड दिखना है, उनसे मुझे अपार्ट दिखना है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डालना पड़ेगा, मुझे अपनी पोजीशन जाननी होगी, राइट? सो फॉर दैट देयर इज द सैट एग्जाम्स दैट यू कैन परफॉर्म एंड सी दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग, on which path are you going, along with improving in the SATs. अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे improvement की जरूरत है, अगर नहीं भी है मुझे practice की जरूरत है, तो why not, we are providing you unlimited practice tests. So keep on practicing, because we all believe that practice make every human being perfect. तो perfection तो चाहिए, right? perfection चाहिए तो practice चाहिए, तो practice भी मिल रहा है, SATs में, test में, exam भी मिल रहा है, statistics भी बता रहा है कि हम improve कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो और क्या चाहिए? क्यों ना हम एक ट्रायल क्लास बुक करें जो कि फ्री है, राइट? यस, एंड वी ऑल्सो टेक सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज फॉर स्कूल एग्जाम. स्कूल एग्जाम में सब्जेक्टिव, वहां पे मल्टी चॉइस नहीं आता एमसीक्यूज की तरह, सारे क्वेश्चंस वैसे तो नहीं होते, तो हमें लिखने पड़ते हैं, हर किसी के स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. सो व्हेन देयर इज एन स्टेप्स हैज मार्क्स, सो वी हैव टू मेक इट अ सब्जेक्टिव टेस्ट. तो उस टेस्ट को कैसे लिखा है आपने, उसके पॉइंट सही लिखे या नहीं लिखे, या फिर ब्रैकेट में कुछ रीजनिंग मिसिंग है जिसकी वजह से पॉइंट्स कट सकते हैं, हम वो भी देख के आपको बताते हैं. सो isn't that great? So I think you will all agree that yes, Swiflearn is a platform which is more about sincerity, it's more about education, and kindly subscribe to the YouTube channel and press on the bell icon so that you never miss any update. So there are so many good teachers, right? हर एक टॉपिक की, हर एक क्लास की सबसे अच्छी टीचर्स आपके पास आ रही हैं आपको पढ़ाने के लिए. तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि अगर वो आना हो एक दिन पहले अपडेट आ जाता है, तो हमें एक दिन पहले पता चल जाएगा कि ये वाली टीचर 1 o'clock आ रही है, 2 o'clock आ रही है, तो उस हिसाब से हम पहले ही फ्री हो जाए, right? So for that you have to click on the bell icon. Yes, students, and kindly share this video with more of your friends जिन सबको लगे कि वाओ इतनी अच्छी टीचर्स पढ़ा रही है या इतना इजीली अवेलेबल है कंटेंट, तो उन सबको शेयर करो ताकि सारे इकट्ठे आके क्विज करें. Right? So every class will interact, we'll solve the questions and have a fun time all together, because you are here only for you guys, right? All right, so now let's start with the topic for which we all are together. Everyone, can you say hi to me if you're there with me? I can see you are there. So let's start knowing each other. So may I know your name? You all know my name is Harneet, right? So what's your name? Okay, so let's start. Just give me your names and then we'll start with the studies. That is the first topic, that is statistics. So we will study what is statistics, the part 4. We have already done 3 videos on that. If you have not seen it, not a problem. इस सेशन के बाद आप दोबारा वो वाली वीडियोस को जाके देखना, जहाँ पे कुछ समझ ना आए तो नेक्स्ट सेशन में पहले ही पूछ लेना. So be ready with your comments that I don't know. Hi Ankit, I'm very happy to see you back with me and it was a delight seeing your message. All right, so here we go. The objective of today's class is the measure of central tendency. अब ये क्या होता है? Mean, median, mode. So 3 M's. We will study 3 M's. That says mean, median, mode. Do you all know what is mean, median, mode? No?
नॉट अ प्रॉब्लम, आई हेयर टू टीच यू. अगर नहीं आता तो आ जाएगा और अगर आता है तो रिवाइज हो जाएगा, राइट? यस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. Before going that, till now we have just determined the data with different means. जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाया, बार ग्राफ बनाया, हिस्टोग्राम बनाया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए. तो हम हर चीज को विजुअलाइज कर रहे थे और डेटा को हम उसको पिक्चर की तरह, ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे. बट हर एक चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते रहेंगे तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हर चीज में ग्राफ दिखाते रहेंगे तो मोनोटोन नहीं हो जाएगा? अगर आज मैं बिजनेस में काम कर रही हूँ, मैं हर चीज में यही बोली जा रही हूँ, अच्छा अब ये चीज है, इसके अंदर एवरेज निकालनी है, इसका एवरेज कितना है, ये देखो ग्राफ, ठीक है, ये है सेंट्रली कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये देखो ग्राफ. तो हर चीज में ग्राफ, तो मुझे कहेंगे वाओ यार आप तो हर चीज में ग्राफ ही बना देते हो, और जिसको ग्राफ नहीं पढ़ना आता तो कुछ समझ ही नहीं आता. ऐसा भी होगा ना? Yes, for that we have also have some formulas, some methods in which we will not be representing data in terms of graph, but still can find out the value what is required. All right, so let's start with today's class. So we have already studied about the data that makes sense of it. Isn't it possible to make some special features which can give us an overview of the whole data through a single number? अब मैंने डेटा बनाया, उसका ग्राफ बनाया, उसको समझने की कोशिश करी, सब कुछ करा, ठीक है, बट हर टाइम ग्राफ ही बनाते रहे तो लॉजिकल नहीं है ना. हर जगह पे ग्राफ दिखाते रहो. Right? So for that we are trying to figure it out कि कोई ऐसा नंबर मिल जाए. अगर हम नंबर डेटा में से एक चीज पर्टिकुलर उठा लेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, राइट? तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है. So this is possible by using measures of central tendency और एवरेज. तो एक चीज का एवरेज निकालना. एवरेज का मतलब पता है क्या? जब हम क्लास में कहते हैं ये वाला बच्चा एवरेज है, or we say that you have shown an average marks. कितनी बारी average हम सुनते हैं, right? So this average means not high, not low, something universally in between. राइट यही मतलब होता है ना. या तो टॉपर्स होते हैं या लोअर्स होते हैं, बीच में जो बच्चे होते हैं उनको हम एवरेज बोलते हैं, राइट? दैट दे can score good if they work hard. Right now they are not working hard, so that's why they come in the category of average. So this is what average that real life happens we'll try to use in terms of mathematics, that we call it mean. Average को क्या बोलते हैं? Now anyone can tell me what do we mean by average? Average means mean. और हम एवरेज को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अगर किसी चीज का एवरेज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स है तो उसके ऊपर हम ये लाइन डालते हैं. ओके, एनीवन, यू ऑल आर देयर, जस्ट टेल मी द सिंपल थिंग, व्हाट डू वी कॉल दिस लाइन? इस लाइन को क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? व्हाट डू वी कॉल दिस? यस. Okay, Ankit, you said middle value of the data. Okay, the middle value is not exactly mean. It's something else that we'll study. It's not wrong, but it's not precisely right. Okay, so just wait. I'll tell you what exactly is. But before that, just tell me, what does this line on the top of X mean? What does this mean? What do we call it? Very good, Ankit. We call it bar. That's right. तो हम मीन को हमेशा जो भी चीज निकालते हैं, x क्यों लिख रहे हैं? जैसे डेटाज होते हैं उन सबको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लाइन बनाते हैं. दैट मीन्स मीन. Alright. So mean refers to the average of a number of the observation. Average of a number of observation. Observations का मतलब क्या होता है? जो हमारे को डेटा मिला होता है. जितना सारा डेटा जिसकी क्या वैल्यू दी हुई है वो सारा हम डेटा अकोमुलेट करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं. ओके, ये सिंपल है. ऑलराइट. इज नोन एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. मतलब जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, जितना भी डेटा दिया हुआ है, उन सब को ऐड कर लो. नाउ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जितनों को ऐड करा, कितनों को ऐड करा, राइट? तो कितनों को ऐड करा उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वी गेट टू नो द एवरेज. एंड एवरेज रेफर्स टू द मीन. All right, Ankit? So it's not a middle value, instead it is an average. All right, generally which can come up to the middle value, but in case that's happening, but the real meaning of mean is average. All right. Okay, now let's see how do we solve this. All right, so we write x to the power
as a bar. That means mean is equals to sum of all the observations upon the total number of observations. If you want, you can write down in your copy this mean and this formula, because this is important. You should remember, and this will we be using in the ahead questions. All right. Okay. So I hope you have written so far. Yes. All right. So let's proceed. Let's see. Let's have the first question with us that says 5 people were asked about the time in a week they can spend during a social work in a community. So हमेशा ऐसा होता है ना कि जब मैम बोलती हैं कि अच्छा ये वाला आपको प्रोजेक्ट दिए, कितने दिन में कर सकते हो, तो एक बच्चा बोलता है 1 डे, दूसरा बोलता है 5 डेज, तीसरा बोलता है 10 डेज, राइट? ऐसा होता है ना, वेरिएशंस आती रहती हैं. तो अब टीचर कहती है मैं ऐसा कौन सी डेट लास्ट हूँ जहाँ पे जिसने 10 डेज बोला है वो भी थोड़ा मेहनत करके जल्दी दे दे, जिसने 1 डे बोला है वो थोड़ा वेट कर ले. तो हम एक बीच की बात करते हैं ना, जो सबके लिए एवरेजली इक्वल हो, राइट? हम वो नॉर्मल भी बात होती है. तो दिस इज व्हाट इज एवरेज. So they said that 10, 7, 7, 13, 20 and 15 respectively. So what did they say? Okay, Ankit, you gave me 13. So let's see. So what we'll do, we'll add 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15. Because what we have to do, we have to find out the mean of the week. So how many do we have? 1, 2, 3, 4, 5. So out of which how many people were there? Observations 5. So we'll divide by 5. So this is known as mean. Mean refers to the sum of the observation. So कौन-कौन सी observation दी हुई हैं? 10, 7, 13, 20, 15, right? And then upon the total number of observation that were 5. Now anyone who can give me the sum of this, what is it? 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15. I don't know. I don't want to calculate. You will tell me and then I'll tell you is it right or not. All right. So now you do the calculation. Tell me what it comes on the top and we divide by 5. So what is here? Who can tell me 10 plus 7 comes out to be 17. 17 plus 13. Then 13, adding more 20 and then 15. What is it? Okay, 65. Is it right? Everyone, Ankit gave me an answer of 65. Is it right? You all are there. You can add, right? You are so much grown up. You can just do the addition. So you can say yes or no. And otherwise you think it's not 65. You can give me the value. I'm waiting for your answers, right? So what is it? What do we add and we get to know? What is this? 10 plus 7, 17. 17 plus 13. What did it come out to be? And then adding 20 and then 15. What's the answer? Ankit said 65. So what's your answer? Is it 65? All right. So let's see. Is that answer right or not? So we have already known that this is the sum of observation upon total observations. Why am I showing you like this? Because this is the way you will write in the school exam. Remember, मैंने starting with the subjective type भी सिखाते हैं. Right, I told you there. So here I am with the platform, Swiflearn, that says and shows that whatever we are saying, it's true. So this is how you will write. It says mean is equals to sum of observation upon total of observation. Sum of observations means adding all of them. That is 65. Well done, Ankit. So your calculation is great. Now 65 upon 5, that was 13, which you already gave me the answer. That's pretty good. So the mean time spent by all the 5 people during the social work is known as 13 hours in a week. Well done. All right. So this would have been more fashionable, more beautifully written. Instead of writing that, the formula is x to the power bar is known as x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 upon 5. हमने x1 क्या लिखा? First observation. x2 represents second observation. x3 represents third observation. So on till x5 represents the fifth observation. Pretty easy. All right. So now I like to know something, a question. Let you all are there. Let me see. Are you able to give me that answer or not? So I want to know the mean of the observation, which are 7. 7 observation मुझे दी हुई हैं, तो मैं numerator में क्या लिखूंगी? So I have the denominator 7 because total number of observation is 7. But what do I write 1 on the top? What should I write? x1 in a fashionable way plus what should it be? Yes, guys, x1 upon x1 plus, yeah, not upon exactly, x1 plus what should I write?
You be my teacher, please. Can you teach me today? Yes, guys. Okay, you teach me today. So it's x1 plus x2, right, plus x3, okay, plus x4 plus x5 plus x6 till the time to go to x7. Right, so we'll move with 7 observations, adding it one by one and divide it by 7. All right, great. Okay. So this is what is a way we can write, but when the observations are quite much. Now, what did you realize that I was writing till 7, I was covering a sheet. Suppose they are 10. Then I'll write x1 plus x2 till 10. Is it feasible? Is it look nice writing the same thing again and again? No. So for that, we will find out a symbol. Do you know what this symbol stands for? Very good, Ankit. Instead of this, we can write it as... Okay, that's not a problem. That's right. So instead of this, we can write this as sigma. We call this opposite, something of opposite of E, right? E की तरह ही है ना, but थोड़ा zigzag है, right? We can say it like this. It's like we write it like this. Can you see this? ऐसे करके भी कोई लोग लिखते हैं, कोई simple यूं लिखते हैं, right? So it is known as sigma. It's a Greek symbol that means sum. What does it mean? It means addition. It means sum. So in that case, when you see this, just remember it that it's written I is equals to 1 to the power of n. हम जहां से स्टार्ट करते हैं ना उसको नीचे लिखते हैं, उधर आई एक्स आई लिखा है ना, मतलब एक्स की जो वैल्यू हम आई की टर्म्स में लिख रहे हैं. इसका मतलब यही है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन. कब तक प्लस करेंगे? xn तक, क्योंकि कहां तक जा रहे हैं? ऊपर टॉप में लिखा होता है, तो लिखा हुआ है n तक. तभी हम उसको ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n. तो n तक ही जाएंगे और n से ही डिवाइड करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. सो डोंट गेट वरीड और आपको दिखाए कि ये कौन सा ई बनाया मैथ्स में, मैम ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये कौन सा zigzag है. तो रिमेंबर इट्स कॉल्ड सिग्मा. व्हाट डू वी कॉल इट? सिग्मा, एंड दैट मीन्स सम, एडिशन. ऑलराइट, ओके. नाउ मूविंग ऑन अहेड, what have we found? We had formed a formula. जो अभी तक हम sum of observation upon number of observation जो English के terms में लिख रहे थे, mathematically हम उसको ऐसे लिखते हैं. Alright, so it's basically a formula for n numbers where the number of observations can be written like this. अगर n 5 है तो हमारा ये वाला बन जाएगा. Simple, right? Not a big deal. 6 है तो x 6 ऐड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे. Similarly, we can go ahead. This means that's okay. So now we'll start a question that we have to find the mean of the observation of 25. अब बताओ अगर इसमें 25 लिखना होता तो क्या करती? x1 plus x2 plus x3 plus x4 na x25 and then divide by 25. Isn't it quite much of my time writing the same thing? And I'm saving that time just writing in a form of a sigma. So normally adding them one by one will be time consuming. अब क्या हो रहा है? 36, फिर दोबारा 36, 40, दोबारा 40, then 40 again, then 40 again, 50 coming 2 times, 70 coming 3 times. So what is it happening? मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. मैं इन सबको ऐड करने लगूंगी तो कितना टाइम कंज्यूम कर लेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, करेंगे ना? Okay. Now when it will take so much of time in consuming, तो उसको easy क्या होता है? याद है हम जो 3rd 4th में थे, हमारी जो मैम थी वो बोलती थी कि रिपीटेडली एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, राइट? हमने वो बचपन में पढ़ा था. हम वही चीज करेंगे नाउ. सी व्हाट विल वी डू? वी आर रिपीटेडली एडिंग 40. हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4. Okay, so means I'll have to add 44 times. Instead of that, if I write 40 into 4, it becomes 160. Isn't that easy? Right, ये तो 40 की टर्म्स ले. Let's imagine, let it be 92. So how many are there? 1 2. सिंपल 2 है तो 92 प्लस 92 भी कर सकती है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, तो दैट विल कम आउट टू बी 4 180. अब इन चीजों को जब बड़ा बन गया तो उनको ऐड करना इजी है, राइट? अगर मैं यहीं से ऐड करना शुरू करती 36 प्लस 40 देन 50 देन 60 देन 70 तो बहुत देर लगती, और कहीं ना कहीं अगर एक जगह पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगी,
right? So making our calculations easy and the way we can check again. अगर मेरे को revision करनी है तो मैं check भी कर सकती हूँ, दोबारा solve करने की जरूरत नहीं होगी. तो for that we'll make a tabular frequency first. तो 36 कितनी बार repeat करा? We'll write 3 times. 40 कितनी बारी करा था? हमने देखा था ना, 4 times repeat करा तो हमने लिख दिया 4 times. Similarly पहले उन सारा जो डेटा जो मेरे को दिया हुआ है उन सबका मैं frequency table बनाऊंगी. Clear? Now, a frequency table बना दिया, so I will multiply with their corresponding frequency. Like 36 3 times repeat करा तो उससे multiply कर देते हैं. 40 4 times repeat करा इसलिए 4 से multiply कर देते हैं. And later on जब वो सब multiplications कर ली, then we will add. Okay, Ankit, you give me the answer. That is 62.6. That's very good. Let's see, is that right or not? I don't know. Let's see. Okay, so in this case, what have we realized? If you think and observe very carefully, this frequency is f1, right? This frequency is f2. जब ये x1 है तो इसकी frequency f1 है, right? जब ये x2 है तो उसकी frequency f2 है. अगर ये x3 है तो इसकी frequency f3 है. तो अभी हम क्या कर रहे थे? इन दोनों को हम multiply कर रहे थे. यही करा ना अभी तक? तो what did we do? We did x1 f1. Then x2 f2, x3 f3. This is what we are doing, so on till the time end. और लास्ट में हम सबको क्या करते हैं? We add it. इन सबको ऐड करके हमें टोटल पता चलेगा ना कि टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है. सम मतलब ऐड करना है, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द मीन. सो व्हाट हैव वी रियलाइज? वी आर रियलाइजिंग दैट जितने नंबर होते हैं उनको अगर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वी एड इट, सो वी गेट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड एंड अ क्विकली कंपैरेटिवली क्विकर मैनर. Clear? So this is what is happening. Now from this what happens? We derive a formula. अभी हमने जो देखा हम वही लिखेंगे. अब आप मुझे खुद ही बताओ अभी तक हमने क्या किया था. We did 9 observations. f1 x1 plus x2 f2, या मे बी f पहले लिख लो, मल्टीप्लिकेशन है सेम है, मतलब f3 x3 plus f4 x4. सिमिलरली कब तक चला? f9 x9 तक. तो अब हम इसी को सिग्मा में लिख सकते हैं. दैट मीन्स एडिशन. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टिल 9 एंड fi xi. fi मतलब f1 1 है, 2 है तो 2 है, 2 है तो 3 है तो 3 है, तो इसलिए हम दोनों को i से डिनोट करते हैं. All right. Now on solving all of this multiplication, I got the sum. What did I get the sum? I got 1507. This was the sum. कितनी observations थी अभी तक? How many did we do? We did 9 observations. So how will I divide? With the total number of observation, that is 9. So अब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगी, right? कि किससे डिवाइड करूंगी? फ्रीक्वेंसी कितनी है? अभी तक जब हमारे पास क्वेश्चंस थे तो हमने उनको देखा कि हमने 9 में डिवाइड करा है. व्हाट डिड वी डू? जस्ट लेट मी गो बैक एंड शो यू. ये चीजें टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 9 नहीं है. 9 उनकी कैटेगरीज बनाई थी जिससे हमारे को ये पता चला था कि दिस वाज गेटिंग रिपीटेड 9 टाइम्स. बट एक्चुअली कितने जनों की फ्रीक्वेंसी है? दैट इज 25, राइट? सो वील डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ total observations which were given to us in the before was how many? 25. Okay, Ankit, it's little different. सिर्फ point में गलती हो गया, right? So you gave me 62.6, it's 62.28. So little mistake. Just be careful when you do it. So you were very good. You were so close. But because of that silly mistake, you will lose 1 point. 1 marks of yours. If it's a 3 mark question, after coming so far, still you will lose 1 mark. So next time, try to make it more perfectly and revise it again. All right? I don't mind you giving wrong answer, but now you realize that this will lose 1 mark. So I'm pretty sure you'll not do it again. Yes, student? Lovely. So when I divide this, I'll get this value. Clear? Okay. So here we go, the alternative method. हमारा ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, यहीं पे ये ऐड कर दिया, यहीं पे इससे ऐड करके इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया. रादर देन राइटिंग दोज ऑब्जर्वेशंस अगेन, मेकिंग इट थ्योरेटिकली, आई एम प्लेसिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल ओनली,
राइट अगर मैं उसको थ्योरेटिकली लिखने लगती हूँ तो मैं हर एक चीज को बार बार लिखती रह जाऊंगी. But when I already made a table, it is visually clear to the teacher also. See, what am I doing? I am here multiplying. I've written it that I'm multiplying these two. Here, what am I doing? I'm writing sigma. That means I'm adding. So I'm adding all of this. Here also I'm writing sigma. That means I'm adding all the F column. Right? Now, what do you want them? You want me to calculate mean. So that is sum of the multiplication of the frequency upon the total number of frequencies that we have. All right. So this is what is an alternative method. In the case of ungrouped frequency, you will use this formula to calculate the mean. जब undistributed है, ungrouping है, grouping नहीं है मतलब class interval नहीं है, single है, तो हम multiply करके इसको prettily easily solve कर सकते हैं. All right. So now try it yourself. Already Ankit you were doing it. That's great. So let's try this question also. Find the mean of salary of 60 workers of a factory whose table is given to us. Now can you tell me the answer? How will I do it? So it's saying 3,000 for 16, 4,000 for 12, 5,000 for 10 workers, 6,000 for 8, 7 for 6, 8,000 for 4, 9,000 for 3 and 10,000 for 1. So how do I calculate this? Can anyone tell me? Okay, so this means this is x1, right? And this is f. Let me write it I, right on the top because I'll change, right? So this is xi, this is fi. Now what will I make a table here? xi, fi, because I have to multiply and see the observations, right? So I'm making a table. Bear with me, I don't have that much space, but still I hope you can understand what I'm trying to do. Yes, so I'll multiply 3,000 into 16. So what do I get when I multiply 3,000 into 16? Can anyone tell me? What is 3,000 into 16? I don't have to multiply with 3,000 because I already know 0 की value 0 ही होती है. So simply I'll write 3 zeros. And 16 को 3 से multiply करते हैं. 16 3s are 48. So that becomes this one. Now I'm multiplying these two. Already I'll write 3 zeros, right? Now 12 into 4. Can anyone tell me what is 12 into 4? Yes, guys? Okay, so what do I do? When I do it, 12 into 4. What is it? 12 4s are? Again, what will come? 48. All right. Moving on to the next one, it comes 50,000. That's right. Moving on to the next one, it comes out 48,000. Then 7 6 are 42, comes out to be 42,000. 8 4s are 32,000. Then 9 3s are 27. That comes out to be 1,000. And then it is 10,000 altogether. Now what will I do? I'll add these two. All right. So on adding, what do I get? Now, okay, Ankit, I'll just check it again. I really don't know. I'll just check it again with the calculation. It's a fault from my side. I'm really very sorry, but I'll go back and check it. All right. And next class, I'll assure you. Okay. All right. So on doing this, what will I do? We'll add. It's x, I, fi. So when I add all of this, whatever I'll get, suppose I get y. And when I'll add this, what will I get? I'll get how much? 60, right? It's sigma fi, that is 60. So now I know y over 60. So whatever will be the mean, it will be sigma I is equals to 1 till how many am I going? So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So till 7 on the top, xi fi upon sigma I is equals to 1 to the 7 of fi. This is the formula that you will write, okay? That becomes the y over on the bottom, it is 60. And then we'll solve, you'll get the mean. So may I know, have you calculated this so far? Were you able to do this question? Yes. So while solving this, you will get the value of, what will be the value? Yeah, when you solve this, you'll get the answer. Let's see what is the answer. So later on, you can check the answer is right or not. That should be 5,083.33. All right. I hope this is right.
that when you solve it and divide it by 60, the answer should be this. All right? Okay. Now moving on to the next thing, that is median. Now what is median? Still now we have understood more, that means average. Moving on to the next topic, that is median. So we have to cover mean, median, mode, right? So median we have already, mean we have already done, median we are doing it right now. So everyone, do you all know what is median? What do we mean by the word median? क्या होता है median? I am here to learn from you. I don't know. Can you tell me what is median? Yes, guys? What do you think is median? Okay, so here I'll come with the topic and I'll explain. Median refers to the value of a given number of observation which is divided in exactly two parts. तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को exactly two parts में डिवाइड करके जो मिडल वाला पॉइंट होता है वो बोला उसका आंसर, वो मिडल ऑब्जर्वेशन आंसर देते हैं. All right, so that is known as median. So let's see how. So when the data is arranged in ascending or descending order, it's up to you. Ungrouping hoti hai, then we have to first thing, yes, very good Ankit, the first thing is to find out the middle one, but before that we have to do is arrange the data. Mean के अंदर हमें arrange करने की जरूरत पड़ती है. Now it's a question. Do we really need to arrange that in mean? मीन के अंदर हमें कभी निकालना होता है तो हम क्या उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में? Yes or no? Let me see who will give me this answer first. That when it is a topic in which we have to find out the mean, do we need to arrange the data in ascending or descending order? Yeah, guys, what is your answer? Yes or no? In mean, I'm talking about, when I'm talking about mean to calculate, do I need to arrange the data? It's yes or no? No, I do not have to arrange it in ascending or descending order. Anyway, I'll get the average. Right? हमने देखा था ना कहीं पे 30 लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है. Right? Dhanuja, welcome back. It's exciting to see you. Yes. So in that ways, उसके अंदर हमें arrange नहीं करना पड़ता. But in case of median, the first most thing is to arrange the data. You have to arrange. You can do it in ascending, you can do it in descending. It's your choice. No hard and fast rule. अगर ascending में करोगे तो भी number आ जाएंगे, descending में करोगे तो भी number आ जाएंगे, but answer सही होना चाहिए, right? Yes. So arranging is not a problem. You can do it in any way, but it is required for doing in median. Mean में नहीं करोगे तो भी चलेगा. But now what happens in these questions is when the number of observation is odd. जब मेरे पास observations odd हैं, odd numbers क्या होते हैं ये सबको पता है? I think everyone right now knows what is odd and even. If you don't, let me revise that again because that is very important when I'm talking about. Even numbers वो होते हैं जो कि divisible by 2 होते हैं, right? So even numbers कौन से होते हैं जो divisible by 2 होते हैं और ending by zeros. 0 क्योंकि 0 होता है तो वो 2 से divisible है, right? That is it. So क्या क्या होंगे? 0, 2, 4, 6, 8 and so on are the even numbers. When I talk about the odd, अगर वो even नहीं है तो automatically odd है. Pretty easy, right? Even है नहीं है तो मतलब odd है. Simple. So in that case, what are left? 0 even हो गया तो 0 को तो हमने even में डाल दिया. 1 even है नहीं तो वो odd हो गया. 3, 5, 7, so on. These are odds which are not divisible by 2. We call it odd number. Clear so far? Okay. Now the number of observation is odd. अगर मेरे पास नंबर है 1, 3, 5, इन दैट केस मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं 1 से और उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं. ओके और उसकी टीएथ ऐड कर रही हूं. 1 plus 2 1 sorry n plus 1 by 2th. This is how you pronounce. Just listen to me carefully. I'm reading it again. n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन. जो n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो उसका आंसर होगा. All right. But when I'll talk about giving you example that says when n is 13, the value of 13 plus 1 by 2, 13 plus 1 that becomes 14. 14 by 2 is 7. So it's a 7th observation. 7 आंसर नहीं है.
Don't say 7 is the answer. No, it's the 7th observation. 7th ascending order में जो 7th number होगा वो उसका आंसर होगा. I hope it is clear now, guys. So this is the mistake what they all do. Ma'am, आपने ये बोला 7 आ गया answer. That is not the answer. The 7th observation is the answer. Clear, guys? Okay, let me see. See now in this platform what I'm telling your mistakes already. I know what the children are doing beforehand and I'm guiding you this also that this is a mistake which is very common. Kindly don't attempt that. If you will do it, it's wrong. So you have no chance to commit a mistake, right? तो पहले ही पता ना कि क्या मिस्टेक होने वाली है तो उससे पहले मैम ने ये बोला ये मिस्टेक है ये नहीं करना राइट ना सो दैट्स मेक्स इजी तो मिस्टेक स्टार्ट्स गेटिंग ऑफ तो जो भी लिस्ट में होती है ये मिस्टेक्स कट ये नहीं करना माइंड में पहले ही ट्रिगर कर जाती है एंड दैट इज हाउ वी लर्न एंड वी स्कोर गुड मार्क्स ऑलराइट द सेकेंड इज व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन अब इवन है तो क्या करें इवन के केस में मतलब है वो 2 से डिविजिबल है ये बोला था ना हमने तो डायरेक्टली पहली जो उसको जो डिवाइड करके जो ऑब्जर्वेशन आती है वो हो गया आंसर सिंपल अभी तक क्या था और था हम उसको 2 से नहीं डिवाइड कर सकते इसलिए हमने उस ऑब्जर्वेशन को पहले 1 ऐड करा और उसके बाद 2 से डिवाइड करा बट अगर इवन है तो डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है तो पहले उसको डिवाइड करके ऑब्जर्वेशन निकाल लेते क्लियर सेकेंड थिंग इज जो ऑब्जर्वेशन निकली उसकी जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी ना वो उसका आंसर होगा मतलब 2 आंसर्स होंगे Alright. So for example, n is 16. तो 16 by 2 एक observation होगी. That is the 8th observation answer होगा. Second is +1. So 8 के बाद कौन सी है 9th observation will be the median. I hope it is clear. Simple logic हो रहा है. डिवाइड नहीं हो सकता तो 1 ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से राइट हो सकता है तो उसको डिवाइड करो उसका साथ वाला भी बोल दो कि दोनों आंसर क्लियर All right, so let's do some practical questions and see have we understood it or not. So find the median of these values. Median निकालने के लिए first things what we remember is arranging the data. First thing first, arrange. किस में करते हैं ascending या descending हमारी choice है to make it simple. Let's do it from ascending. All right, so what have I done? I have arranged the data. So first thing is 25. और अरेंजिंग करने के लिए रिमेंबर दिस थिंग आई टेल यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट कॉन्सेंट्रेट फॉर अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड ओके व्हाट इज इट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज व्हेन यू आर टेकिंग अ वैल्यू पुट अ क्रॉस सो दैट यू डोंट रिपीट दैट वैल्यू अगर आप एक ही चीज को दोबारा लिखोगे तो ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएंगी तो ऑब्जर्वेशन जैसे ही बढ़ जाएंगे और आप नीचे की चीज देखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा ऑलराइट सो व्हेन आई हैव रिटन 25 आई विल पुट अ क्रॉस What is next? Which is the smallest one? 31. Okay, cross 31. Then 32, cross 32. 37, cross 37. 39. Then 42. Written cross 43, 45, 46. By this, I am able to visualize. See, I have taken all the numbers. Even if it's repeating, I will write the repeated one also. I should not miss it. Then later on, I'll see, okay, how many observations are there in the question. Remember that you will count the observation from the question, not from the answers which you have written. Maybe it's a point that you have missed a number. Then your question becomes a problem later and you think it's a right, which is not. All right? तो question की observations कितने हैं ना वो हमेशा question से ही count करना. उससे हमारे नीचे के आंसर के observations का भी आंसर आ जाएगा कि हमने कौन सी टर्म मिस करी है. When I'll solve. All right? This is second tip. For the same question. So it's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 observation. Let me count at the bottom. Is it 9? मैंने सारे questions copy करे हैं या नहीं? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now precise मैंने सब कुछ copy कर लिया. Questions. Okay? Second point is to see observation is even or odd. So number of observations कितनी थी? 9. 9 क्या है? Odd है. ऑड है तो डिवाइड नहीं हो सकता तो ऐड करना पड़ेगा राइट रिमेंबर एक लॉजिक बताया था ऐड करने का तो 9 + 1 by 2th वैल्यू होगी सो 9 + 1 becomes 10 10 by 2th वैल्यू होगी दैट इज डिवाइड करके 5th वैल्यू आ गई दैट मीन्स 5th वैल्यू मतलब 5th ऑब्जर्वेशन जो डेटा में असेंडिंग ऑर्डर में जो मैंने लिखी है वो ऑलराइट सो इट्स 1 2 3 4 5 5th कहां पर आई 39 पे सो व्हाट इज द आंसर 39 अब अगर बोलते हैं कि मैम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना क्यों जरूरी है
here is the answer because the answer is 39. बट अगर यहाँ देखते तो क्या आ रहा है आंसर 1 2 3 4 5. मेरा आंसर यहाँ आपके केस में क्या आ रहा है 46. तो 46 राइट आंसर होगा? No. So remember, the first thing is arranging. The second thing is to count the observations from the question. All right. Third thing is then to find out the median. I hope it is clear now कि हमारा आंसर 46 किसी भी तरीके से अब नहीं आना चाहिए. I hope you will never ever commit this mistake, right? All right, let me see. I'll give you another question. Are you able to find that out or not? All right, before that, I'm so sorry, I forgot. The next topic is median. We have done it. Now it's mode. So after that, I'll give you practice for sure. All right, so let's understand what the topic is. It's mode. The mode is the value of the observation which occurs more frequently. जो सबसे ज्यादा आता है. Mode क्या है? जो सबसे ज्यादा आता है, जो जिसकी frequency सबसे ज्यादा है, उसको mode बोलते हैं. All right. So mode is a value observation which occurs the most frequently. An observation which has maximum frequency is called the mode. Mode का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी भागकर सबसे ज्यादा जो आता है, जिसने सबसे ज्यादा नंबर लाए. अगर सबके 90 आए तो मोड क्या हो गया 90. सबसे ज्यादा बच्चों के 90 आए तो मोड 90 हो गया. सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो गए तो मोड वो हो गया. Alright, just remember mode is thing that keeps on repeating lot of number of times. Alright, okay. So for this question which I told you, I'll give you one question for median. So you have to calculate a median for this. Let's see who will give me the answer. So I can see so many students. Let me quickly get the answer. What is the first thing? We'll do stepwise together, okay? So what is the first thing to do in this question? We have to find out the median. तो median करने से पहले क्या चीज करेंगे? Yes, guys, what will I do? The first thing to do for calculating the median of this. Yeah? Thank you, Ankit. That was right. Data which sets so ज्यादा आता है, जो repeat होता है, उसको mode कहते हैं. Very good. Precisely right answer. Well done. Okay, so move to this question. It says find the median of a value. इस value का median निकालना है. तो median के लिए सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम? The first thing that we do is, yes, arrange the data in ascending or descending order. It's our choice. So let's do that first. So in that case, it was saying first of all median, then we'll move to mode. So unfortunately, I could have shown you the answer for mode. All right, so this is not the answer in this case. So let me see what the question is. All right, so here we go with the question that says that we have to find out the median, right? So median कैसे करते हैं? सबसे first thing is median. You said 39. Let's see. First, what will I do? I'll arrange. So it's 31, 32. So 31 cross. Remember 32 written cross. What is next? Before that, it's 25. See, I've missed it. So I'll write it before this. It helps me to check have I written all the questions or not. All right. Now it is 37. Cut. Then it's 39. Then I'll cut this. Then it is what? 42. Then 43. Cut. And last is 45. How many observations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 plus 1 by 2th. That comes out to be 10 by 2th. That comes out to be 5th value of the observation. So what is 5th? 1, 2, 3, 4, 5. 39 is the answer. Well done, Ankit. Very good. I'm very, very happy with you. All right. So now moving on to the next question. It says that we have to try it ourselves. That says the median of a data is given to me. All right. It has a range in ascending order. And we have to find out the value of x. Now, understand this question, what it says, that the arrangement of this data is already done in an ascending order. All right, 48, now again 48, then 50. Now, median is given to me, that is 40. All right, I have to find out the value of x. So, for this, how will I do? First of all, I will calculate the number of observations. What is it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I know number of observation is 8. That is even. So that means observation क्या होंगी मेरी? एक तो होगी 8 by 2th value.
और एक होगी 8/2th प्लस 1th वैल्यू, राइट. सो 8/2 होगी 4th वैल्यू एंड 5th वैल्यू. सो 4th वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4. तो 4th वैल्यू इज x एंड द 5th वैल्यू इज x प्लस 10, राइट. अब दो वैल्यूज हैं, उनका क्या दिया हुआ है मुझे कि मीडियन क्या है? 40 है, right? Okay, you gave me the answer 35. Let's see how is it possible. Have this? Let me see that. Okay, Ankit, let's check. Is the answer right or not? So the question is, answer is right. It's 35. All right. So that's great. So what have I done? Let me go back and explain how did we reach here. It's like we reached here by, we so far has calculated x plus 10, right? These were the two things that we have calculated. So this comes out to be how much? 40/2. क्यों? मीडियन क्या होगा? दोनों ऑब्जर्वेशन के सम को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. Is it right? Am I giving a right answer? Right. So it comes out to be 2x plus 10 becomes 40 into 2, that is 80. So 2x is equals to 80 minus 10. So 2x becomes 70, which implies x is equals to 70/2, which is 35. So here I get the value x is equals to 35. Well done, students. I'm very happy that you have understood and you are getting the logic behind that. All right, so this is a question for you. Now you have to find out the mode for these questions. So it's a question given to you whose value is 11, 25, 12, 28, 18, 17, and on and on and on. What is a mode? Remember, what did we discuss? Mode means which is repeating more times. The frequency of a thing that is keep on repeating. Right? So in this case, what is the mode? Yes, guys, you are there. Give me the answer so that I can take your name and praise that yes, you are studying hard and understanding the topic. Because we here at this platform of Swiflearn here to teach you guys, here to explain the things so that you good on your school exams, right? Yes. So now what is a mode of this? So when I'll see 11, okay, it's repeating only one time. So 11 will not be the answer. I know it. 25, just one time, no. 12, all right. It's coming one time itself, not an answer. 28, two times. Okay, so till now I have 28 in my option. When I talk about 18, it's 1, 2, 3. So 18 is repeating how many times? 3 times. So now 28 is left. 18 is the answer. Is there any other repeating more than 3 times? No. So the mode is 18. That's right, guys. Well done. All right. Now moving on to the next question. It says, the mean of the weights of the students if 7 things is given to me. The individual weight of 6 of them is given to me. I have to find out the 7th question. All right. Okay. Now, before starting this question, मैं एक simplest way में बता देती हूँ कि questions किस तरह के आते हैं. एक तो thing होगी डेटा दिया होगा और हमें mean निकालना होगा, median निकालना होगा, mode निकालना होगा. Simple. तो उसके लिए हमें calculate करने के लिए formulas we all have it, right? The second thing that is required to do is that मुझे mean की value दी होगी या मुझे मीडियन की वैल्यू दी होगी और मुझसे ये पूछा जाएगा कि डेटा में कौन सा चीज मिसिंग है. एंड दैट टाइप ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन का ये सैंपल क्वेश्चन है जो मैं आज आपको करवाऊंगी. All right. So listen to this and read this question carefully and understand the logic and strategy which is not taught anybody else, right? So this different platform, everyone, please subscribe to the channel. Press on the bell icon so that you don't miss this minor updates जो यहाँ पे टीचर्स आके देती हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता. All right. So I hope you all are subscribing to the YouTube channel. Yes. All right. So let's see. Ankit, you have already given me the answer is 61. That's great. That's superb, I would say. But let us solve with more students which are present there, right? So everyone, you all can also give me the answers. Like right now, I'm taking the names of Ankit. I can take your name also. It does not matter the answer is right or not. The thing that matters is कि आप solve कर रहे हो और आप practice कर रहे हो, अपनी mistakes को rectify कर रहे हो, right?
Okay, so it says, reading back to the question, it says the mean weight per student in a group of 7 students is given to me is 55. Okay, मुझे mean बताया हुआ है कितनों का, 7 students का, that is 55. Alright, what else is given to me? मुझे 6 की तो observations already दी हुई हैं, 6 चीजें दी हुई हैं, मतलब मुझे 7th निकालनी है. फॉर्मूला मेरा मीन का क्या होता है? सिंपल मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जहां पे कहां तक होंगे ये 7 तक, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7. राइट, लेट मी राइट दैट. ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 7. अगर मैं कहती हूँ कि मेरे को 7th ऑब्जर्वेशन नहीं पता तो लेट मी कंसिडर इट इज टू बी y, क्योंकि मैं हर चीज एक्स एक्स में ले रही हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहती, इसलिए मैं इसको एक y डिनोट करती हूँ. आप एक्स लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा इरिटेशन नहीं, I would say that's a wrong word, I would putting it, but the right word is थोड़ा सा confusion हो सकती है. Alright, so in this case what will I do? 52 plus 54 plus 55 plus 53 plus 56 plus 54 plus y upon 7. ठीक है, अब इन सबको मैं ऐड कर सकती हूँ. मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ 55, तो इसको मैं 55 मल्टीप्लाई बाय 7 करूं इक्वल टू ये सम प्लस y कर सकती हूँ. इन दैट केस बाय सब्ट्रैक्टिंग इट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, and the value of y is 61. It should be the answer, which is right. Superb, Ankit. That was a perfect answer. All right, so answer is 65 kgs. Okay, guys. So this is a question for you. You have to solve this question and give me the answer in the chat box. Don't forget, I read all your comments. I promise I honestly read each and every student, whoever is practicing those questions or not. I'll go to their comments and see have they given the question. After, in the end, if I give a question to practice, are they really practicing from seeing the video or not? And if you guys do it, I'll come back with a shoot out saying that well done students, you practiced that question. I'm really happy. And you got the right answer or not, that does not make a difference. All right. So here's the question that this case, the score of an English test out of which 100 of 20 students are given to me. तो 100 का टेस्ट था, ये सब कुछ डेटा मुझे दिया हुआ है, मुझे मीडियन निकालना है, मुझे मोड निकालना है. मीडियन के लिए फर्स्ट थिंग इज टू अरेंज एंड देन फाइंड आउट द मीडियन. मोड तो रिपीट ज्यादा और मोड है. ऑलराइट गाइस, this is a question. You can come back to the video because now it's time for me to wind up and say goodbye to you all. Just pause the video here, solve this question, and when the question is solved, then play on the play button and you can see the answer. Surprise, surprise. All right. So the answer here is, it should be the median and mode, that is 88. So this should be your answer. I hope you'll get to this point. You can check yourself. And in case ये answer ma'am ने गलत provide करा है, तो there is a comment for you. You can comment and say, no ma'am, it's not a right answer. Then I can write in the comments that what is the right answer. All right. But so far, try and practice so that you can achieve what you want in your life and be there, the position which you're dreaming for. All right, guys. Okay, so here I go with the last thing, which I request you all to kindly subscribe to the channel of the platform Swiflearn. Share with more of your friends, whoever are there, so that they can also come here with your teachers with whom you are doing. We are not exactly a teacher, we are your friends. So we all can play together and understand together. All right, Ankit, you already got the answer. That's great. Okay then, till then guys, take care, bye, be safe and enjoy yourself. Okay then, bye guys, take